Good morning students, welcome to e-learning classes. Students, today we are going to learn second part of chapter number 11, mouth, teeth and tongue. In this part we are going to learn about different parts of a tooth. Previously in first part of this chapter we learn about different types of teeth, and today we are going to learn about parts of a tooth. And student, one thing I want to tell you, this chapter is very interesting and today's topic is also very interesting. So don't skip the video in between, watch the whole video, and at the last of this video I will assign you work, so you have to do that work in an interesting way. So let us start the text. Parts of a tooth. A tooth may be divided into two parts, crown and root. Student, firstly I just tell you, a tooth is divided into two parts. Mainly it is divided into two parts, crown and roots. The crown part of a tooth is visible to us and roots are not visible. These are inside below the crown there are different parts of roots. So crown is visible part of tooth. Visible part of tooth is called crown. This is crown. ये बेटा जो part है, this is upper part of teeth and these are germs, and these two parts are visible to us, and visible part of the tooth is called crown. Crown is visible part of a tooth and roots are invisible. Invisible part of tooth is called root. Crown is the visible part of a tooth. So hope so it's clear to you. Mainly a tooth is divided into how many parts? It's divided into two parts, crown and root. Crown is visible part and roots are invisible part. Crown is visible part. Root is the portion of the tooth which is inside the germs. Beta, here this is a crown of a tooth and below the crown there is root. And in a crown there are two things consist of crown. Firstly enamel and secondly germs. The pinkish fleshy portion of the tooth, our tooth is covered by pinkish and fleshy part. This part is called germs. Here you can see in the image, in the diagram, this is pinkish and fleshy soft part. It is called germs. And germs, below the germs there is a root. Germs are the soft, pink and fleshy part surrounded the teeth. बेटा germs जो है ये soft pink color का fleshy part होता है जो हमारे tooth को surround करता है. Means it is all around the teeth. upper part को छोड़ के हमारे जो टूथ होता है, दांत होता है, उसके चारों ओर ये फ्लशी पार्ट जो है ये होता है, इसको हम जर्म्स बोलते हैं. Now the next part is enamel. Enamel is the hard substance covering the crown. This part, this whitish hard part of the tooth is called enamel. In other words, we can also say top layer of the crown. ये वाला जो part है बेटा, this whitish part, it is called enamel. In other words, we can say top layer of crown is called enamel. E-N-A-M-E-L, enamel. What we call to the top layer of crown? It is called enamel. And enamel is hard substance that cover the crown. Hard चीज होती है. You can also feel when you keep your finger on the tooth, you can feel
the hard substance, and this hard substance which can be seen on your tooth, it is called enamel. Below the enamel is dentine. Below the enamel, this whitish part is enamel, and below the enamel is dentine. Dentine supports the enamel. बेटा जो डेंटाइन सेकेंड पार्ट होता है रूट का वो है डेंटाइन. डेंटाइन जो है वो इनेमल को सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट्स द इनेमल. इनेमल की सपोर्ट में जो वाइटिश पार्ट होता है टूथ का उसके नीचे डेंटाइन होता है, एंड डेंटाइन का टास्क क्या होता है? टू सपोर्ट इनेमल. देन नेक्स्ट इज पल्प. Pulp is the soft substance that fills the empty space within the mouth. Below the dentine is pulp. ये वाला पार्ट जो है बेटा ये पल्प है, और जो पल्प है ये क्या करता है? दिस इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस. सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जो हमारे टूथ में जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको कवर करता है. एंड इनसाइड द पल्प देयर आर ब्लड वेजल्स. इसके बीच में ब्लड वेजल्स होती हैं और टाइनी फाइबर्स, फूड थ्रेड लाइक फाइबर्स, नर्व्स भी होती हैं. थ्रेड लाइक जो फाइबर लाइक नर्व्स जो हैं, दिस इज ऑल्सो इनसाइड द पल्प, एंड ब्लड वेजल्स आर ऑल्सो इनसाइड द पल्प. So students, this is all about parts of tooth. Once again I am going to revise it. You just keep in mind important things. Firstly, a tooth is divided into two parts, that is crown and root. Crown is visible part of tooth and root is invisible part of tooth. And invisible part of tooth means crown. There are two parts. दो parts होते हैं crown में. एक होता है enamel, second होता है germs. इनेमल जो है ये हार्ड सब्सटेंस और टॉप लेयर होती है क्राउन की, और जर्म्स जो होती हैं ये पिंकिश, फ्लशी और सॉफ्ट पार्ट होता है जो हमारे टूथ को सराउंड करता है. सेकेंडली हम आ जाते हैं रूट पे. रूट जो है इसके इनेमल के नीचे, क्राउन के नीचे एक हार्ड सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है जो इनेमल को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन. जो पार्ट इनेमल को सपोर्ट करता है बिलो द इनेमल, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन. और बेटा डेंटाइन के नीचे होता है पल्प, और जो पल्प होता है ये सॉफ्ट पार्ट होता है, एंड इट इज ऑल्सो कवर द एम्प्टी स्पेस इन द टूथ. एंड इनसाइड द पल्प देयर आर टाइनी नर्व्स. इसके बीच में टाइनी नर्व्स और ब्लड वेजल्स होती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ टूथ. सो द इंटरेस्टिंग वर्क विच आई वॉन्ट टू असाइन यू, दैट इज यू हैव टू मेक अ डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. आपने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की डायग्राम बनानी है. जैसे आप यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ. यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एंड यहाँ पे बेटा मैंने टूथ की डायग्राम बनाई है रफली. आप मुझे हेल्प करोगे. व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, विच पार्ट ऑफ टूथ इज दिस वन? ये कौन सा पार्ट है? दिस इज इनेमल. इनेमल कौन सा पार्ट होता है? अपर पार्ट ऑफ अ टूथ that is visible. Firstly, tooth is divided into two parts. First part is called crown and second part is called root. फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन, सेकंड को बोलते हैं रूट. और क्राउन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इनेमल. दिस इज इनेमल एंड इट इज विजिबल टू अस. एंड बिलो द इनेमल इज dentine. This part is called dentine and it supports the enamel. And the third part is pulp. P-U-L-P, pulp. And pulp cover the empty space in the tooth. And inside the pulp there are tiny blood vessels. And this fleshy part of the tooth is called
This fleshy part of the tooth, pinkish in color and surround the whole tooth, it is called germ. From here up to here, it's called germs. So we should take care of tooth. Tooth is very important part of mouth. It gives shape and size to our tooth. I just also want to show you the different parts of crown. Live study of crown. Students, here I am going to show you the crown. This part, upper part of tooth is called enamel, and enamel is part of crown, and these fleshy pinkish soft part of the tooth is called germs. These are germs and this is enamel, and both are called crown. So thank you and have a nice day, and do the diagram on your notebooks.